हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। ट्रांसपोर्ट नंबर। आज हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर? जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो करंट एनायन और कैटायन के द्वारा कैरी होती है। जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड आउट होता है बाय द कैटायन और द एनायन इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्ट नंबर। The fraction of total current carried out by the cation or the anion is known as transport number, and it is also called as Hittorff number. During electrolysis, the current is carried out by the cations and the anions. The fraction of total current carried out by the cations or anions is called as transport number. Transport number. It is also called as Hittorff number. हिटॉर्फ एक साइंटिस्ट का नेम है। हिटॉर्फ ने ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला प्रपोज किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज हिटॉर्फ नंबर। इफ V positive represents the speed of cation and V negative is the speed or migration of anions. The transport number of cation T plus is equal to V plus upon V plus plus V minus, यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का होगा, इज इक्वल टू करंट कैरीड आउट बाय द cation divided by total current carried. And in the similar way, transport number of anion will be T negative is equal to V negative upon V plus plus V negative is equal to current carried out by the anion divided by total current carried, जो दोनों आयन के द्वारा करंट कैरीड आउट होगी। ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन और एनायन का निकल आता है। नाउ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज रिप्रेजेंटेड बाय T and that of the anion by T negative. The transport number of cation is represented by
T plus and that of anion is by T negative. Now T plus upon T minus is equal to V plus upon V minus, and T plus plus T minus is equal to 1 if the speed ratio of cation and anion V plus upon V minus is represented by the R. We have R is equal to T plus upon T minus is equal to T plus upon 1 minus T plus and T minus is equal to 1 upon 1 plus R. यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है जो हमारे T नेगेटिव और T पॉजिटिव की वैल्यू होती है. Now there are two methods for the determination of transport number. Both the methods are very important method. One is Hittorff method and second is moving boundary method. First of all, we will discuss the Hittorff method. Let us see the Hittorff method. Determination of transport number. सबसे पहले हम बात करेंगे Hittorff method. Hittorff method. This method is based on the change in the concentrations of solutions in the vicinity of electrons. Vicinity of electrons. Mobility of cation U positive upon mobility of anion U negative is equal to fall of concentration around anode divided by fall of concentration around the cathode. And transport number of cation T plus is equal to U plus upon U plus plus U minus. ये हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन होता है. Therefore T plus is equal to fall of concentration around anode divided by fall of concentration around anode plus fall of concentration around cathode. यहाँ पर total fall in concentration around the anode and around the cathode के बराबर होगी.
fall of concentration around anode divided by total fall in concentration. If the concentrations are measured in terms of gram equivalents, then T plus is equal to number of gram equivalents lost in the anodic compartment divided by total number of gram equivalents lost in both the compartments. जब हम T पॉजिटिव निकाल रहे हैं, कैटायन के लिए निकाल रहे हैं, तो टोटल number of gram equivalents lost in the anodic compartment divided by total number of gram equivalents lost in the both the compartment, वो हमारी टोटल fall in concentration के बराबर होगी. But the total number of gram equivalent lost from both the compartments is equal to the gram equivalent deposited on each electrode. The total number of gram equivalent lost in the anodic and cathodic compartments put together is invariably equal to the total gram equivalents deposited on both the electrodes. So, अब यहाँ पर हमारा जो ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट एंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड इस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. T प्लस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट lost in the anodic compartment divided by total number of gram equivalent deposited
on both the electrode। जो यहाँ पर T पॉजिटिव होगा वो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक कंपार्टमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड या बोथ द इलेक्ट्रोड्स। सिंस अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो ये शो करता है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ copper deposited in a copper colorimetry by the same quantity of electricity। Since according to the Faraday second law, the total number of gram equivalent deposited on each electrode must be equal to the number of gram equivalent of copper deposited in the copper colorimeter by the same quantity of electricity, then T plus is equal to number of gram equivalent lost in the anodic compartment divided by number of gram equivalent of copper deposited in the colorimeter। So since T plus plus T minus is equal to 1, so T minus is equal to 1 minus T plus। इस प्रकार से हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसके बाद सेम तरीके से यहाँ पर सेम मेथड से इस प्रकार से T प्लस प्लस T माइनस इक्वल टू 1 होता है, वहाँ से हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन के स्थान पर पहले हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन डिटरमाइन कर लेते हैं, उसके बाद T प्लस प्लस T माइनस, चूँकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन विल बी इक्वल टू 1, दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर का सम 1 के बराबर होता है। तो इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट करके दूसरा ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हिटॉर्फ मेथड में हम ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।